supplication to the Almighty and seek His guidance to protect us from the evil and guide us in whatever endeavors we take up. Movement for this institution, as we have organized a very important two-day workshop around a very pertinent theme, disaster management, disaster preparedness of Jammu and Kashmir under the India's presidency of G20. I would like to get your attention towards the fact that we all belong to Jammu and Kashmir, and this region is vulnerable to multiple disasters. In the past, we have witnessed a number of disasters and we suffered a lot, both in terms of life as well as property. Jammu and Kashmir is a multi-hazard prone area and we are vulnerable to earthquakes, floods, landslides, avalanches, cloudbursts, windstorms, besides human-induced disasters as well. Here, the citrus builds up in the fault zones, and the sudden release of seismic citrus can cause large earthquakes. I'll ask you a very simple question. How many of us have kept a ladder at our home which can be used in the hazard? Do we have? No. How many of us have kept a rope and a source of water which can be used in case of immediate rescue? Do we have? No. This is our preparation at the individual level. Now, what is our preparation at the community level? What is our preparation at the institutional level? And what is our preparation at the government level? These are some of the questions we all need to ponder upon, and with these questions in mind, we are organizing this two-day workshop on disaster preparedness of Jammu and Kashmir in collaboration with the Department of Disaster Management, Relief, Rehabilitation and Reconstruction, Government of J&K under India's presidency of G20. Subsequently enable ourselves and future generations to have better lives. I am sure that such events, holding of these workshops, creating awareness and training our students, our NSS volunteers and other students will help to rebuild our communities with greater trust and resilience to build back better and be prepared for any future shocks. I am confident that this workshop will provide a common platform for all academicians, researchers, policymakers, especially our students, our volunteers, to devise a practical approach with regards to preparedness and mitigation measures. The study also reported that in India, around 1 lakh people were killed by natural catastrophes, which is the world's biggest, fifth highest death rate, so to say. It's known to all of us that Jammu and Kashmir is prone to various natural and human-made disasters, which have had a significant impact on the lives and livelihoods of the people living in the region. The unique topography and geography of the region, characterized by high mountains, deep valleys, and extensive river systems, make it highly vulnerable. Always, I have seen in my career of almost 22, 23 years now, every time I go for a training program, there is something that I learn. And even if one of you or two of you pick up something very important with regard to mitigation of disasters, preparedness of disasters, I think we would have achieved what we have set out to achieve in this workshop in our own lifetimes. I'm sure all of you have seen the 2005 earthquake and the 2014 devastating flood that took place. There have been a lot of learnings from these two events. Framework in the national level and the UT level, and also how we are going from
post-disaster to pre-disaster in a mitigation and prevention and preparedness phase. अपना मुंह जो है इसके मुंह पे रखना, पूरा उसका मुंह जो है अपने मुंह से कवर करूंगा, और ताकि और नजर मेरी इसके चेस्ट पे रहनी चाहिए, इसका चेस्ट जो है एक्सपेंड हो रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले मैं अपनी सांस ले लूं, फुल माउथ रेस्क्यू ब्रेथ मेरे देने इसको करना चाहता हूं। मैं इस विक्टिम की रेस्पॉन्स चेक करूंगा, क्या ये विक्टिम कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। सो मैं क्या करूंगा, ये जो पेशेंट की कॉलर बोन्स होती है, कॉलर बोन्स पे मैं टैपिंग करूंगा, आगे ओके, फिर आप ठीक हो। इसकी क्योंकि जो शार्प एंडस होते हैं बोन के, जब बोन फ्रैक्चर होती है तो वो बोन जो है बाहर भी निकल सकती है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इस पेशेंट को यहाँ पे हमने इस पार्ट को सबसे पहले इमोबिलाइज करना है, इस पार्ट की मूवमेंट हमने स्टॉप कर दी है, इस पार्ट को रेस्ट पे रखना है, थोड़ा बहुत एलिवेशन मिली इस पार्ट इम्प्रोवाइज्ड तरीके से। क्या होगा है, अगर ये पेशेंट है, इसी पेशेंट की शर्ट हम निकाल सकते हैं, इसको हम एज बैंडेज यूज कर सकते हैं। नहीं तो ये जो आपका अपना स्कार जो होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है, वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। या मेरी अपनी शर्ट जो है, कुछ भी होगा, मफलर होगा, मैं उसको यहाँ पे यूटिलाइज करके इस पेशेंट को, क्योंकि मैंने इसकी जान बचानी है, कम से कम हॉस्पिटल तक ये पेशेंट जो है जिंदा पहुंचना चाहिए। ये नॉट इन्होंने लगाया, सबसे पहले एक सिंपल नॉट, लूज एंड जो है इन्होंने यहाँ पे नहीं छोड़े हैं, और एक साइड इसी नॉट को दोबारा से ओपन करके एक साइड आगे की तरफ, एक साइड पीछे की तरफ लाया, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इसका हेड सिक्योर हो गया। अगर ऐसे कोई क्रैक होगा तो ये वाला एंड जो है उस क्रैक को अपनी पोजीशन पे लाए, अगर ऐसे कोई क्रैक होगा तो ये वाला एंड जो है उसको अपनी पोजीशन। अब मैंने देखना है जितना सीएसएफ इसकी एयर ओपनिंग से नोज से आ रहा था अभी तक, चाहे वो ड्रॉप वाइज आ रहा था या ऐसे एक कार जैसे निकल रही थी, अब मुझे देखना है कि वो स्टॉप हो गया कि नहीं। इनकेस क्योंकि क्या होता है, बैंडेज मैंने लगाया, वो थोड़ा बहुत जो है वो बढ़ गया, अभी तक ड्रॉप वाइज आ रहा था, अब वो ज्यादा निकलता है, दैट मीन्स कि मेरा बैंडेज लगाना सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैंने दोबारा से ही ओपन करना है, खोलना है, और इसकी पोजीशन मैंने चेंज करनी है। मेरे लिए बायस एजाज, बायस फख्र और बायस इन्बसात है कि मुझे इस 2 रोज़ा वर्कशॉप के इब्तदाई तकरीब और निशस्त के लिए शुक्राने की तहरीक पेश करने का मौका दिया गया। अपनी इस जिम्मेदारी को अमली जामा पहनाते हुए मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले जिस शख्सियत और हस्ती का शुक्रिया अदा करना अपना फर्ज ऐन समझता हूं, वो किसी तारुफ और तारीफ के मोहताज नहीं। जी हाँ, मेरी मुराद इस निशस्त के सदर मजलिस, मेहमान खुसूसी और महकमा आला तालीम के मीर कारवां, गिरामी कद्र, इज्जत माब आली जनाब आलो कुमार साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए महकमा आला तालीम जम्मू कश्मीर से है। हमारे कॉलेज में जो प्रोग्राम हुआ ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इस लिहाज से कि इस तरह से हमें ब्रीफ किया गया कि हम सिविल जोन में रहते हैं और हमें पूरी तरह से अवेयर रहना चाहिए कि कोई भी डिज़ास्टर जब हो तो डिज़ास्टर सिर्फ डिज़ास्टर न रहे, बल्कि हमारी इतनी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, हम डिज़ास्टर के लिए पूरी तैयार इस तरह से रखें कि हम यहाँ के लोगों के काम आ जाए और वो सारी तैयारियाँ करके रखें, जिसके लिए हमें पहले से स्ट्रेस किया गया। मैडम डिज़ास्टर में बहुत ही शुक्रगुजार, उन्होंने ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे इनेकाद किया जिससे हमें डिज़ास्टर अवेयरनेस होती है, क्या कि हम ग्राउंड लेवल जब हम बच्चों को सिखाएं, उनको भी प्रिपेयर रहे कि फ्यूचर में कैसे डिज़ास्टर के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, फिर मिटिगेशन को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम रिस्क जो है डिज़ास्टर को कम कर सकते हैं। On this workshop, I would like to thank our worthy principal for organizing this workshop for 2 days. We as in-service teachers will get more knowledge. If something happens in near future, we will get knowledge how to deal with the climate, how to deal with the disasters.